Hi guys, EPC Academy. Time, distance, and speed. Today's our this topic. Introduction. What is the relation between distance, time, and speed? So you can understand speed. Unit of speed. What is kilometer per hour? Means kilometer means distance. Per hour means time. In denominator you write time. So if you send the time in the side, then it goes in multiply. It means distance equal to, you can say, speed into time. This is the simple formula. Means this is the relation between distance, speed, and time. So always you have to learn it. Distance is equal to speed into time. जिस स्पीड से चल रहे हो उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगी हमें डिस्टेंस. Okay. Some things are very important to calculate our questions. See what is the importance here. Suppose if we fix d constant means distance constant. Suppose जैसे मैंने 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक, मैंने फिक्स कर दिया डिस्टेंस कितनी 40 किलोमीटर. अब मेरे स्पीड और टाइम चेंज किए जा रहे हैं, तो स्पीड किसके रिलेटिव होगी, टाइम की. जितना टाइम कम कर दो उतनी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. जितना टाइम ज़्यादा कर दो उतनी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इट मीन्स यहाँ से अगर s की वैल्यू फाइंड करो, t कांस्टेंट हो गया तो ये t रखा जाएगा डिनोमिनेटर में. इट मीन्स s इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. मीन्स सिंपल सी बात, अगर यहाँ टाइम t कम होगा तो s ज़्यादा, अगर t यहाँ ज़्यादा हो तो s कम हो जाएगा. ठीक. सिमिलरली इन रिलेशन ऑफ टाइम टू स्पीड, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा. सिंपल सी बात. जैसे 40 किलोमीटर, अगर मैं डिस्टेंस 40 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करूँ तो 1 घंटे में कवर हो जाएगी. अगर वही स्पीड में वही डिस्टेंस 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करें तो मुझे टाइम कितना लग जाएगा, 2 आवर्स लग जाएगा. मतलब एस को कम किया तो टाइम ज़्यादा. नेक्स्ट, इफ एस कांस्टेंट, अगर एस कांस्टेंट तो देखो डी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब जैसे डी बढ़ेगा वैसे टी बढ़ेगा, जैसे टी बढ़ेगा वैसे डी बढ़ेगा, जैसे टी कम होगा वैसे ही डी बढ़ेगा. ठीक है. इट मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. सिमिलरली इफ वी फिक्स टाइम देन यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस. ये दिस concept you have to understand very well. If you understand this concept, then we will move on the next phase. Okay, we are going to start our questions. So now see first question. Change in 1 kilometer per hour into meter per second. Simple. 1 kilometer per hour, if you want to change meter per second, simple, you multiply by 5 by 18. But you think how 5 by 18 comes? See, 1 kilometer equals to how many meter? 1000. You can write it 1 kilometer upon 1 hour. 1 kilometer means 1000 meters. 1 hour means 60 minutes. 60 minutes means 1 minute equals to 6 seconds. 60 into 60. After that simplification, you will get 5 upon 18. It means whenever we change the speed kilometer hour to meter per second, then we should multiply by 5 by 18. Okay. Now 1 meter per second to kilometer per hour. See here, if I find here from here 1 meter per second is, then 18 goes here, and this 5 is coming in denominator means 18 upon 5. So let us understand. यहाँ देखो ये स्मॉल यूनिट है तो यहाँ 5 क्या है, स्मॉल. यहाँ देखो यूनिट क्या होगी, बिगर. तो ये you put the value in numerator bigger means 18 upon 5. See, you simplify here. If you want to change, you go through this method, but you don't go through this method, you come here direct. Okay, 18 upon 5. Then you enhance your speed. Now, next question number 3. Now we are entered in our exam oriented portion. Okay, that, that we have discussed, that is a concept. You have to understand very well. Now we are going to discuss the question that comes in your exam. Now, see the question number 3. The speed of the car is 54 km per hour. Find the speed of the car in meter per second.
if we want to find this speed in meter per second, so you see meter per second is small unit, it means you should multiply it by 5 by 18. 18 3s are 54, 5 3s are 15, 15 meter per second. Simple. Next question number 4. See, a car moved with a speed of this, find the speed in kilometer per hour. Kilometer is a bigger unit, you should multiply it 18 upon 5. You see this speed we should multiply by 18 upon 5, then we will get 5 4 the 18 4 the 72, 72 kilometer per hour. Next, a person crosses a 600 meter long street in 5 minutes. What is the speed? Kilometer per hour. First you see here the units, what is meter and minutes. So you need to find kilometer and this. So you know that this meter in 1 kilometer how many? 1000 meter. It means it should be multiplied by 1000. Sorry, divided by 1000. So you divide it by 1000. Okay. After that, this 5 minute. This here should divide by which? This here should divide by 60. Otherwise, you can do another way. This 60 meter, this 5 minute is not in second, so you change in second. So you see 600 upon 5 into 60, because in 5 minute how many second? 60 second. In 1 minute 5 into 60. Okay. Now this speed is in meter per second. If you want to change in kilometer per hour, so you should multiply it by 18 upon 5, because meter per second is a small unit. You are moving to higher unit, you should multiply 18 upon 5. Now after simplification you will get 7.2 kilometer per hour. Now question number 6. If a person walks at a 14 kilometer instead of 10 kilometer. Okay. See, this type of the question is very easy question. Okay. Why? I am going to tell you now. First you see here, he would have to walk 20 kilometer more in the same amount of time. You see, here in question is mentioned that time is same. If the time is same, then you go through the formula. Distance equals to speed into time. If time is fixed, then distance directly proportional to speed. Okay. Distance directly proportional to speed. It means if we find the ratio of the speed s1 and s2, what is 5 is to 7. See why 5 is to 7 I have written. First you write this speed because this is first speed, then after this speed. Okay. Then he walked 20 kilometer more. Now you see here the difference between the speed how much? 2. It means that this is 2. This is 2. 2 equals to 20. If 2 equals to 20, then 1 equals to 10 unit. Now what is question asking? Actual distance. So actual distance is denoted by this 5. So it means 10 into 5, 50. Okay. Now you go through this method. I have explained you. First you find S1 S2 ratio. Why S1 S2? Because time is fixed. Time is fixed, it means distance directly proportional to speed. Formula you know very well, distance equal to speed into time. Next, a man moves at 2/5 of his actual speed. मीन्स उसकी पहले एक्चुअल स्पीड अगर हम 5 मान लेते तो नेक्स्ट स्पीड उसकी क्या होगी 2. ठीक है, हमने मान लिया एक्चुअल स्पीड क्या है 5, तो उसकी नेक्स्ट स्पीड न्यू स्पीड क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी. ये 2/5 का मतलब कैंसिल हो जाएगा. यहाँ 5 लिखो अपॉन में 5 5 5 कैंसिल 2. ठीक है. He reaches in destination 9 minutes late. Find the actual time is the destination. It means here one thing is mentioned, the actual time taken by him to reach the destination. Destination is fixed. Destination fixed means distance fixed. If distance fixed, do you know the formula? Distance equals to speed into time. Distance equals to speed into time. Distance equals to speed into time. Now
See, 5 initial speed and the 2 is the final speed. So see here, he reduced their first reducible speed, so you also write anything you can write. If you want to first write actual, then you can write actual. If you write first reducible, then you can write reducible. Now you see distance speed is right here reducible. So reducible speed means come speed, then after initial speed. Okay, this is actual speed. Now, if you d fix there, then what is the relation? S and T are S and T are inversely proportional. It means time is just inversely proportional of this speed. Means time, what is the ratio of time? You write 5 is to 2. Just you note it. This you write here 5 ratio 2. Okay. Reverse it. This you write as it's same because first you write a reducible, then you write actual. This you write same. But you change this ratio. You change this ratio. Otherwise you change this. Means only one side you can change. Either this, either this. Okay. Now, if I want to find actual, first you know that he reaches his destination 9 minutes late. 9 minutes late. It means what is? This is difference given. What is given? This is difference. 5 and 2. What is the difference here? 3. You see here in that time ratio is 3. Difference. So 3 equals to 9. If 3 equals to 9, then one value what is 3. Now what you need to find? Actual time. So actual time what is this? 2. 3 to the 6. 6. Otherwise you go through this method. Okay. Now question number 8. A man moves 25% more than his actual speed. Listen, this is a concept of percentage. 25% more means what is? 1 upon 4. 1 upon 4 means 1 increase. It means after increasation, what is the value is 5 and initial value is 4. Okay. So increased value right here 5 and initial value 4. Okay. This you have to understand yourself how this 5 and 4 come. Okay. Now he reaches his destination 9 minutes earlier. मतलब क्या हुआ देखो speeds are the if speeds are more then time it will get less because distance is constant distance fixed. Okay. Now time ratio what you will do you just it's reciprocal right here because distance constant. Okay, reciprocal means 4 is to 5 you write first here this you write same as actual increased. Okay, now 4 is to 5 you see here difference what is 9 minutes. So here the difference 1 unit value 9. Now what after you find actual time what is this 5 to 9 5 is 45 minutes. Next question number 10. A man goes to his office 30 km per hour and returns home at 40 km per hour by following the same route same. Okay. He takes a total 35 minutes in to and fro journey. Okay. Find the distance between the home and office. Okay. So a man goes to his office this speed and returns home to this. मतलब घर से ही ऑफिस से घर लौटा तो रूट सेम रखा उसने इसका मतलब डिस्टेंस सेम अगर डिस्टेंस सेम तो स्पीड और टाइम के रेशियो क्या होंगे रिवर्स हो जाएंगे. ठीक, तो स्पीड और टाइम के रेशियो क्या है 3:4. 3:4 टाइम रेशियो क्या हो जाएगा 4:3. टोटल टाइम उसे कितना लगा 7. ठीक, और यहाँ पे टोटल टाइम मिनट कितने बता रहे हैं इन एंड 35 मिनट. ठीक, इसका मतलब 7 वैल्यू 35 7 5 से 35 7 5 से 35. Okay, 1 value what is 5. 5 4 the 20. Going multiply the way returning. ठीक है, अगर हम going देखो 4 3 the 12. It's 4 3 the 12. Okay, sorry. Speed what is our initial speed 30. And now for going what is the time 4. 4. Now what is we will find here value of ratio 5. It means 4 5 is 20. Going time what is 20. 20 multiply 30. 20 multiply 30 what you will get distance 20 multiply 30 600. But one thing you notice here that 600 we have got it but
there is a minute is written here. So here is the 5 I have considered here the minute. Okay, if the minute, then you should multiply it divide by 60. It means if we have got here 600, 600 divided by 60 will get 10. Now you can understand by this formula, you can also understand as going t going. As going means 30, t going means here 4, 4 5 are 20 minute, 20 minute you convert in hour, then you will get 1 upon 3. This you multiply, you will get 10 minutes. You can go through any process, but you will get right answer if you follow the right procedure. Now this question is very important to understand. First you see how we can deal with this problem. See, a train moves 40 km per hour if it is late by 11 minutes to reach the destination, but it moves 50 km per hour, it late by 5 minutes only. Okay, now find the actual time taken by him to reach the destination. See here, if you find here the time ratio, what you will get 4 is to 5, sorry, speed ratio. Okay, now what is this? Yes, speed ratio. ओके, अगर S1 की स्पीड से था तो कितना 11 मिनट लेट हुआ, 50 की स्पीड से तो कितना मिनट लेट हुआ 5, इसका मतलब यहाँ डिफरेंस कितना है 10. ओके, बट वन थिंग यू नोटिस दैट डिस्टेंस इज कांस्टेंट. अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है इसका मतलब टाइम जो हुआ वो जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाए तो 5:4. ठीक है, अब देखो एक और मजेदार चीज, यहाँ 11 मिनट लेट हुआ मतलब कि कोई डेस्टिनेशन हमारा सपोज यहाँ ये डेस्टिनेशन, अगर ये 11 मिनट लेट हुआ फिर ये कितना मिनट लेट हुआ 5. ठीक, तो इनका टाइम ट्रैप्स है, कितना मिनट डिफरेंस आ रहा है 6 मिनट का डिफरेंस. क्यों, यहाँ से ये 5 मिनट लेट हुआ और यहाँ से ये कितना मिनट 11 मिनट लेट हुआ. इसका मतलब अगर दोनों यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है 6 मिनट का डिफरेंस है. कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है 6 मिनट का डिफरेंस. ठीक है, अब देखो 6 मिनट का जो डिफरेंस है, तो अगर हम यहाँ टाइम में डिफरेंस देख रहे हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है 1. इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या है 6, 1 की वैल्यू क्या है 6. ठीक, अब देखो एक्चुअल टाइम में फाइंड करना है, तो एक्चुअल टाइम हमारे देखो S1 और S2, पहले स्पीड क्या थी ये थी. ठीक है, और बाद में स्पीड कितनी हुई ये. ठीक, एक्चुअल टाइम में पता करना है कि कितने मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई. ठीक, इसका मतलब कोई भी टाइम फाइंड करना है तो हमने ये फाइंड किया, एक की वैल्यू हमने यहाँ से पता करी कितनी है 6 6 पंजे 30. ये जो वैल्यू हमें मिला है किसके अकॉर्डिंग मिली है 6 पंजे 30. अगर हमने पहले ये इसका मतलब हमें ये जो वैल्यू मिली है 5 ये 40 के अकॉर्डिंग मिली है. ठीक, अगर ये 40 के अकॉर्डिंग हमें मिली है, इस 40 के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल चेंज की थी. ठीक, अगर ये 40 के अकॉर्डिंग है, 40 के अकॉर्डिंग हमारा है, इसका मतलब हम कितने मिनट लेट हुए थे 11 मिनट, बट हमारे यहाँ पे कितना है 6 मिनट 30 मिनट आ रहा है, हमारा टोटल टाइम निकला 30 मिनट, लेकिन फिर भी हम क्या हो गए लेट हो गए 11 मिनट. ठीक है, मतलब एक्चुअल टाइम में 11 मिनट क्या हो गया देर से पहुंचे. ठीक, इसका मतलब इसमें जो टाइम निकाला उसमें 11 मिनट ऐड होके आ रहा है. क्या हो गया ऐड होके आ रहा है. अगर हमने 40 अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की तो हमारा जो 6 पंजे 30, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा. ठीक, अब अगर ये 11 मिनट लेट हुए तो हम ये 11 मिनट क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर. ठीक, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 19. इसका मतलब हम कितने मिनट में पहुँच सकते थे 19 मिनट. ठीक है, इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं. इसको S1 S2, S1 S2 मतलब दिस डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ टाइम, तो डिफरेंस ऑफ टाइम व्हाट इज 6. तो देखो 6 और S1 S2 हमारे क्या है 4 एंड 5, और 4 और 5 का डिफरेंस कितना है 1. ठीक है, तो 4 5 जा 20, 23 जा 60, तो यहाँ आ गया 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है न्यूमरेटर में 2. ठीक, न्यूमरेटर में 2,
डिनोमिनेटर में क्या बचा था 1, ठीक है, यहाँ 2 आ गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, Shweta van goes at 20 km/h. She is late by 4 minutes. Reach her school. But if she moves with 25 km/h, she is 2 minutes earlier. यहाँ पे क्या हुआ, लेट हुई, यहाँ पे अर्ली मतलब पहले, और लेट मतलब कि क्रॉस, वो पहले छूट चाहिए और लेट मतलब पहुंच ही नहीं पाया, और वो 2 मिनट पहले पहुंचे, मतलब अगर चलते रहे तो बाहर निकल लेते। Now, find the time taken by the Shweta to reach the school at the scheduled time. Find the distance traveled by the Shweta to reach the school. Okay. वही सेम क्वेश्चन उसी तरह, ठीक है। तो देखो हम इन दोनों का रेशियो फाइंड कर पहले श्वेता का। अगर वो 20 की स्पीड से 25 की स्पीड, तो रेशियो क्या आ गया 4:5। अब जो डिस्टेंस लेना है इसका मतलब हमारा टाइम क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो 5:4 हो जाए, 5:4। बट पहले वो क्या हुई थी, लेट हुई थी, ठीक है। अगर एक्चुअल टाइम टी मान लें, एक्चुअल टाइम टी मान लें, तो उसे टी से ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है, मतलब t+4 लग गया टाइम, ठीक है। तो ये t+4 किसके अकॉर्डिंग, 20 के अकॉर्डिंग, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू लिखोगे तुम क्या लिख सकते हो, टी एक्चुअल प्लस 4, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, 2 मिनट पहले पहुँच गए, इसका मतलब एक्चुअल टाइम जो भी था उसमें से 2 कम, ठीक है। और ये रेशियो हमारा क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है 5:4। नाउ सी हियर 5:4, you see the time difference what is here, 4 and 2. If you find the difference, this is a plus value, this is negative value, then it also change in plus value. Then 4 plus 2, 6. Okay. Don't, if you find the difference of one positive value, one negative value, then you will get positive. It means difference is here 6. If the difference is 6 here and here the difference is 1, it means 1 by unit value is 6. Now 6 5 is 30. It means t actual what is 30 minus 4, you will get 26 minute. T actual how much, 26 minutes. Okay. Now if I want to find the calculate distance, so distance equals to what is as speed into time, ठीक। Which one time, actual, no, वो डिस्टेंस तक तो पहुंचा है लेकिन लेट पहुंचा है, लेकिन क्या हुआ, लेट पहुंचा, तो हमें एक्चुअल टाइम नहीं लेंगे हम, जो से मतलब रियलिटी में टाइम लगा लेट होने में, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो ये 1/2 जो वैल्यू है ये एक्चुअल से कुछ ज़्यादा है, मतलब लेट वाला टाइम, ठीक। इस लेट, this late time multiply with the initial speed. What is the initial speed is 20. 20 multiply 1/2. You see here initial speed is 20 and late time what is 4. This is a 4-minute delay, and according to that what is the late time, 5 according 1 by means 30 minutes, 30 minutes means 1 by 2 hours means half hour should multiply 20, you will get 10 kilometers. This point you have to understand, only this, okay. Now you need to find at what speed should she travel in order to reach the school at scheduled time. Okay. Scheduled time में अगर उसे reach मतलब पहुंचना है, तो देखो actual distance कितनी है 10, actual time कितना लगा 26 divide by 26, but this 26 is minute, so you should divide by 60 hours means 60 minutes also, then you will get this unit is kilometer per hour. After that you simply
question number 12. An airplane covers a certain distance at a speed of this kilometer per hour in 5 hours. To cover the same distance in this hour, find the speed. देखो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट रखा, लेकिन इस बार टाइम दे रखा, दोनों जगह स्पीड फाइंड करनी। तो इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं ट्विस्ट है। तो हम पहले मानते हैं ये वाला टाइम t1 मतलब, ठीक है, देन t2, t1 अपॉन t2, t1 रेशियो t2 5 in 5/3. Okay, this 3 simplify, you multiply by 3 in the both side, then you will get this ratio 3:1 and divide by 5. The ratio मतलब यहाँ टाइम में रेशियो के अकॉर्डिंग 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। नाउ डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो टाइम रेशियो क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे स्पीड के लिए। ठीक है, स्पीड और टाइम दोनों कैसे होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर ये तो हमने S1 पहले लिखा, टी S2 पहले लिखा, तो ये टाइम रेशियो देखो यहाँ 3:1 तो यहाँ 1:3 कर देंगे, हो गया। ठीक, अब देखो बहुत सिंपल, पहले 1 की वैल्यू यहाँ कितने रखी, 240, तो 3 की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल सी बात, 24 मल्टीप्लाई 3 720 किलोमीटर। ठीक है, इट मीन्स एरोप्लेन की स्पीड कितनी, 720 किलोमीटर पर आवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, a train can travel 50% faster, 50% faster मतलब 1/2, 1/2 means 3/2, मतलब अगर इसकी इनिशियल स्पीड 2 तो फास्टेस्ट स्पीड व्हाट इज 3। then car both start from a point A at the same time, reaches point B 70 km away from A at the same time. Okay. On the way, however, the train lost about 12.5 minutes while stopping at the station. Find the speed of the car. दोनों पॉइंट ए से स्टार्ट सेम टाइम में, रीच द पॉइंट बी 70 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए एट द सेम टाइम, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात, टाइम कांस्टेंट है। ठीक, पहले स्पीड कितनी है, टी कार टी ट्रेन, the train lost about 12.5 minutes while stopping at the station. Find the speed of the car. The train faster, t car upon t train equals to 12.5 160. Distance upon speed equals to this. Okay, distance क्या होगी दोनों के लिए 75. S car, S train की वैल्यू क्या होगी 50% मतलब 3/2. Simplify, you will get S car is this. Okay, इस क्वेश्चन को हम रेशियो से डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट, without stoppage the speed of, find the speed of the car. Next, without stoppage the speed of a bus is 54 km and with stoppage is 55 km. Find how many minutes does the bus stop per hour. Okay, see here how much, 9 km less per hour. Due to stoppage the bus covers 9 km less per hour. Okay. Find the stop bus stop per hour. How many minutes does the bus stop per hour? 9 km per hour you convert in the time taken to cover a 9 km without a stop. 9 km less per hour, 9 km without a stop.
How much? 9 upon 54. 9 upon 54. How much? In minutes, you convert in 60. Divide by 60. You will get 10 minutes. Again, you understand this. 54 kilometer and stop is with 45 kilometer. For how many minutes does the bus stop per hour? डिफरेंस अगर हमने फाइंड किया इसका मतलब है 9 किलोमीटर लेस पर आवर, एक घंटे में वो कितना लेस हो रही है 9 किलोमीटर. ठीक है. हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर्स, कितने मिनट एक घंटे के में मतलब कि रुकती है. ठीक है. देखो स्टार्टिंग उसकी स्पीड विदाउट स्टॉप कितनी 54. ठीक. टाइम टेकन टू कवर दिस 9 किलोमीटर, हम जो 9 किलोमीटर लेस होगी ये जो डिस्टेंस जो कम रहेगी. ठीक है. मतलब कवर नहीं कर पाएगी. ये जो 9 किलोमीटर 54 की स्पीड से कवर करने में कितना टाइम लगेगा इसको 9/54 आवर्स. बट हमें इसमें कन्वर्ट करना है इसको मिनट्स में, तो इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे 10. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Okay, next. In a flight 600 kilometer, an aircraft was slowed due to bad weather. If the average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and the time of the flight increased by the 30 minutes, find the duration of the flight. एयरक्राफ्ट क्या करेगा स्लो डाउन कर देगा. द एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर. द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज इंक्रीज्ड बाय द 30 मिनट. पहले अगर हमें सपोज टाइम लगा टी, उसके बाद हमें टाइम कितना लगेगा t+30. पहले स्पीड क्या होगी दिस, और ये जो स्पीड t+30 लगा मतलब टाइम डालना हो तो स्पीड क्या रहेगी कम हो गई. ठीक. अब ये जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा 200 किलोमीटर, क्योंकि एवरेज स्पीड रिड्यूस की कितनी 200 किलोमीटर. ठीक. नाउ after simplify this equation we will get quadratic equation -3/2 1, so t equals to